Hello everybody, welcome to Blessing Institute and we are on the end of this chapter. Today the question number 12, the chapter is relation and function. You all know. The question number 12 is that uh, consider the binary operation star from R cross R to R and circle from R cross R to R defined on as A star B is mod A minus B given there, and A circle B is A for all AB belongs to R. This is the given data. So that star is commutative but not associative. Star is commutative but not associative. Second thing is circle is associative but not commutative. ये दो चीज हमें पहले शो करनी है कि स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सर्कल इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, then so that for all ABC belongs to R, A star B circle C is A star B circle A star C, means star is distribute on the circle. ये हमें शो करना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, डज सर्कल डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, वो भी हमें चेक करना है. मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पे है. पहले ये बताओ कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है. फिर स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर सर्कल, और सर्कल है कि नहीं ये हमें चेक करके बताना है. तो चलो सबसे पहले स्टार के लिए हम डिस्कस करेंगे कि भाई स्टार कम्यूटेटिव है कि नहीं. हियर A star B is mod A minus B is mod B minus A is B star A. ओवर, खत्म हो गया. Therefore star is commutative. क्लियर पॉइंट. अभी हमें ये चेक करना, अब बताना है कि स्टार एसोसिएटिव नहीं है देन गिव द एग्जांपल और इलस्ट्रेशन. हमारे पास ये मेथड तो है कि रिलेशन बन रहा है देन प्रूव, नहीं बन रहा है देन गिव द एग्जांपल. नाउ 1 star 3 star 5 equal to 1 star 3 star 5 is mod 3 minus 5 according to definition is 1 star minus 2, but the modulus of minus 2 is 2 and equal to. अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस मैंने सेम लिया हुआ है इसीलिए चांसेस होने के है, हमें नहीं हो उसमें इंटरेस्ट है. सो वी विल टेक 2 star 3 star 5, 2 star 3 star 5 equal to 2 star modulus 3 minus 5, but modulus 3 minus 5 is minus 2 and modulus of minus 2 is 2, so 2 star 2 equal to modulus 2 minus 2 equal to 0. It is our LHS. Now for RHS, 2 star 3 star 5 equal to modulus of 2 minus 3 star 5. 2 minus 3 is minus 1. Modulus of minus 1 is 1. 1 star 5 equal to mod 1 minus 5, that will be 4. Therefore 2 star 3 star 5 not equal to 2 star 3 star 5. Therefore star is not associative. पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया कि भाई स्टार कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, वो प्रूव हो गया. अभी सर्कल के लिए
नाउ फॉर सर्कल, सर्कल के लिए क्या करेंगे, सर्कल इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, तो नहीं है उसमें इलस्ट्रेशन दो. नाउ टू सर्कल 3 is 2. According to definition of circle, the first element is the answer. It is the relation. First element is answer. 3 circle 2 is 3. Therefore, 2 circle 3 is not equal to 3 circle 2. Therefore, circle is not commutative. Getting or not? Circle is not commutative. Now we have to show circle is associative. For that, see, it is ये हो रहा है, means जनरल फॉर्म में हमें आंसर देना है. सो यहां पे देखेंगे, नाउ ए सर्कल बी सर्कल सी, पहले यहां पे अप्लाई करेंगे. ए सर्कल B circle C is B because first element is the answer. A circle B is A. And for RHS, A circle B circle C, for A circle B, A will be the answer, and for A circle C, A is the answer. Therefore, A circle B circle C is A circle B circle C. Therefore, circle is associative. दो क्वेश्चन के आंसर आ गए. स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. सर्कल इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव. अभी एक चीज हमें ये दिखानी है कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर सर्कल. स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर सर्कल कैसे? सी, ए स्टार बी सर्कल सी. स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर सर्कल, दिस वी हैव टू प्रूव. चलो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ए स्टार मोड बी माइनस सी. A star, sorry, the definition of circle is what? First element is the answer, so answer will be B. Now for star, ये circle की definition थी. Now the definition of star is what? Difference in modulus is number 1. Now for the RHS, A star B circle A star C, A star B circle A star C. चलो, what is the definition of A star B? That is modulus of A minus B circle modulus of A minus C. Now here the circle is the relation. Circle is saying what? Circle is saying that the first element is the answer. We have the first element is mod A minus B. So mod A minus B is the answer, number 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, LHS means A star B circle C is A star B circle A star C. So star is distributed over circle. Now the last question is what? Is circle distribute over star? ये क्वेश्चन है. Does circle distribute over star? तो चलो ये वेरीफाई करेंगे. A circle B star C. चलो, what is the definition of star? Definition of star is difference in modulus, and definition of circle is first element is answer, so it is LHS. Now for the RHS, if it is distributive, then ये होना चाहिए A circle B star A circle C होना चाहिए. अब हो रहा है कि नहीं, that we have to verify. चलो, what is the definition of circle? First element is answer.
First element is answer. Definition of star is difference is modulus. So 0. So from 1 and 2, see, they are not equal. Therefore, from 1 and 2, A circle B star C is not equal to A circle C star A circle B star A circle C. Therefore, circle is not distribute over star. Circle is not distribute over star. Finish. So there are 4 questions, and here we have answer of all 4 questions. So write down this. We have to show that null set is identity element. If null set is identity element, then what? See here, A star phi. By the definition of star, the definition of star is saying A minus phi union phi minus A equal to A minus phi union phi minus A equal to A is given. So A star null set is A. It is proved. अभी हमें प्रूव करना है कि null set star A equal to A. So according to definition, phi minus A union A minus phi. By the definition of set theory, phi intersection A dash union A intersection phi dash, because it is the result. If we have A minus B, we can write A intersection B dash by the rule of 11. So ये मैंने लिखा. Now phi intersection A dash will be null set. Union A intersection phi dash means universal set, that is known as X. So phi union A, because A intersection universal set is A. So A. So in both the cases, we are seeing A star null set equal to null set star A equal to A. Therefore, null set is identity element. Suppose, chalo, second result is so that A is inverse of itself, means A is A inverse. So suppose B is inverse of A. If B is inverse of A, then A star B should be null set. Chalo, what is A star B? According to definition of star, it will be A minus B union B minus A is null set if the union of two sets is null set. If the union of two sets is null set, therefore each will be null set. Each will be null set. If A minus B is null set, it means A subset B, and if B minus A null set means B subset A. If all the elements of A are in B, then A minus B will be null set. We know this. Now see, A subset B, B subset A, it means A is equal to B. But B is what? B is inverse of A. But B is inverse of A, therefore A is equal to A inverse, because B is equal to A inverse. Hence prove the result. Clear point? तो ये भी बढ़िया सम था, can be asked in the exam. So write down this. So आज यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा
अंडरस्टैंडिंग वाला है, प्रैक्टिस भी जरूर पड़ेगी आपको। सो प्रैक्टिस के लिए हर रोज हम तीन चार सम्स लेंगे। अभी एक या दो लेक्चर और जाएंगे हमारे इसमें, एंड देन वी विल कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सी यू।